on your videos so that we can have a very interactive session. Yes, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए so that we can have good interactive session. Yes. First of all, I wanted to check, is my audio video clear? If my audio video is clear, then just write clear in a chat box. लिखो ना, आज लिख दो यार. If audio video is clear, just write clear in a chat box so that I'll get to know. I think we are also live on YouTube. The people those who are connected from YouTube, yaar, please let me know, is my audio video clear? If you can hear me out, I want every one of you to write it down. नहीं तो बाद में पता पड़ता है मैंने सेशन डिलीवर कर दिया और आवाज नहीं आई आपको. Because there are cases where people didn't connect their audio. That is why there can be a case. Okay, perfectly fine. Waiting for the people from YouTube to answer this. Okay. First session after becoming chartered accountant. फर्स्ट सेशन आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओह माय गॉड. मुझे यार पहले तो फीलिंग जानना है कि कैसा लग रहा है यार. कोई अनम्यूट करके बताओ ना कैसा लगता है सीए बनने के बाद. मुझे भी जानना है यार, मुझे भी जानना है. मुझे भी ऑटोग्राफ चाहिए. यस, थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट. थैंक यू हिमांशु. कोई बताना चाहेगा कि कैसा रहा जर्नी? और जो जूम से कनेक्टेड है यार, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. अगर आप वीडियो ऑन करके बैठोगे तो आपको मैं इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करवा दूंगा. तो फटाफट आप वीडियोस ऑन कर लीजिए. शर्माने की कोई बात नहीं है, राइट? शर्माने की कोई भी बात नहीं है, राइट? और एक सेकेंड. हाँ, एक सेकेंड. यस, हेलो. अपना एक्सपीरियंस तो बताओ यार, कैसे, मतलब नींद में रिजल्ट देखा, उठा और रिजल्ट आ गया, या दोस्त ने उठाया? कोई तो बताओ अपना एक्सपीरियंस यार, मैं सुनना चाहता हूँ. बिल्कुल नींद में रिजल्ट देखा था. मैं सिरसा से बोल रहा हूँ, हरियाणा से. कौन बोल रहा है? एक बार अखिल बोल रहे हो? अखिल. अच्छा, एक बार हो सके आपका वीडियो ऑन कर दो. सब आपसे मिलना चाहते हैं अखिल भाई, जो कनेक्टेड है. आपको देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं सीए कैसे दिखते हैं. अच्छा, आपका कुछ वॉइस इशू हो रहा है, मैं एक सेकंड म्यूट कर देता हूँ. हाँ अखिल बताओ. हाँ अखिल, हेलो. Yeah, sir, it feels very great. Actually, I have woke up at 8:15 on 15th of July. अच्छा. And someone asked me, how's your result? अच्छा, मैं रिजल्ट तो इवनिंग में आने वाला, रिजल्ट तो भी आएगा. हाँ 2 बजे आएगा हर बार की तरह. ठीक है. मैंने देखा, व्हाट्सएप खोला और रिजल्ट आ गया. एंड फिर मैंने सर, मतलब फ्रेंड को जगाया स्पेशल चेक करने के लिए, क्योंकि मैं खुद से चेक नहीं करता हूँ कभी. अच्छा, ओके, माय गॉड. अच्छा, नहीं तो बहुत लोग का होता है ना कि ये मेरा लकी है, ये मेरी लकी है, राइट? मैं इन्हीं के साथ, मैं मम्मी के साथ रिजल्ट देखता हूँ, या सिर्फ मैं अकेला ही देखता हूँ रूम बंद करके, या मैं उसी जगह पे जाके रिजल्ट देखता हूँ तो मैं पास होता हूँ. मतलब सर, मैंने उसी जगह पे जाके, छत पे जाके रिजल्ट देखा मैंने. अच्छा, ओ भाई साहब. अच्छा. और मैं पहले गुड़गांव था. वेडनेसडे की नाइट को, थर्सडे की नाइट को, फ्राइडे को मैं सुबह सिरसा आया. और फिर मैंने रिजल्ट देखा और आई एम शॉक्ड टू पास एंड एट 201 मार्क्स ऑफ ग्रुप 2. ओ भाई, सबसे ज्यादा खुशी पता है रैंकर को नहीं होती है. आप समझिए, जिनको 40 आए या जिनको 200 आए, या जो एकदम इसमें सेट ऑफ में पास हुआ है, सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों को होती है. ऐसा कोई है जो सेट ऑफ से पास हुआ है? जरा एक बार हैंड रेस करो यार, हम मिलना चाहते हैं उन लोगों से, वो खुशी देखना चाहते हैं. या कोई ऐसा है जिसको किसी सब्जेक्ट में 40 है? मुझे ऑडिट में 40 आए थे, मैं बता रहा हूँ. ठीक है सर, मुझे कॉस्ट में 40. अच्छा, कॉस्ट में 40 आए आपको. ओके. I got 40 in my first attempt. 40 आए. एसएफएम में 40 आए. अच्छा, गॉट इट. और कोई यार, मैं एक दो लोगों से स्टोरी सुनना चाहता हूँ कि यार क्या हुआ एग्जैक्टली आफ्टर बिकमिंग अ सीए. फिर क्या माहौल बना, मतलब दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो. कौन बताना चाहेगा यार? हेलो सर. हाँ, भाग्यश्री बोल रही है. यस, बताओ भाग्यश्री, कैसा रहा माहौल सीए बनने के बाद? अरे सर, इतना मजा है, क्या बताओ. 14 को यहाँ पे आपके यहाँ पे इंटर्नशिप खत्म हुई. हम लोग सब रात को ऐसे ही गूगल मीट पे थे, लेट तक को सोए. एंड मॉर्निंग में मेरी फ्रेंड का कॉल आया, उठाया उसने मुझे, बोली मैं पास हो गई, तेरा देख मैंने बोला मजाक कर रही है, 9 बज रहे सुबह के अभी, तू किधर उठा रही है मेरे को. उसने बोला कब के रिजल्ट आ गए, 1 घंटे हो गए, देख ले अभी. और मैं, जैसे आपने बोला स्पेसिफिक जगह, तो मैं सोच ही रही थी, मैं एक स्पेसिफिक जगह गई, वहां पे रिजल्ट चेक किया और मैं चिल्ला रही हूँ. घर पे सब सो रहे, सबको चिल्ला के पास हो गई. अच्छा, ओ भाई, मम्मी उठो, मैं सीए बन गई हूँ. मम्मी बोल रही बेटा तू नींद में, तू भी सो जा. सब इतने खुश हो गए. मेरी छोटी बहन भी नींद से उठ गई, वो भी तालियां बजाने लग गई. फिर तो क्या माहौल ही था, बस मैसेज डाला एक ग्रुप पे और सबके कॉल पे कॉल आने शुरू हो गए. ग्रेट.
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वो लाइफ का एक अलग ही मजा होता है यार, बचपन से जो सपना होता है, बचपन का प्यार नहीं बट बचपन का सपना पूरा हो गया है ना। कुछ लोगों का प्यार भी पूरा हो गया तो क्या पता, बट ठीक है। नेवरदलेस इट्स गुड टू मीट ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड आई लव द सेशन आफ्टर यू बिकम अ सीएस बिकॉज एक अलग ही माइंडसेट से लोग आते हैं। बिकॉज अब यहाँ पे हम ये नहीं बात करेंगे कि एसएफएम में क्या पढ़ना है और ऑडिट में क्या पढ़ना है। Here we will be talking in terms of what next, right? So sessions are also great and thank you. I think someone is mentioning RM में आपको 70 मार्क्स आए, बहुत सारी बधाइयाँ, है ना हर्षिता, काफी अच्छा लगा सुन के। सो ग्रेट। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, अपने वीडियोस ऑन कर लिया और अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दी अनम्यूट करके। यार मैं चाहता हूँ कि यार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए यार, इतनी जो मेहनत की अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, राइट? तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, राइट? ग्रेट। Yes, really happy to meet you all. But again, a question is that कि सर आप सीए तो बन गए हैं, फोन भी आ गए हैं, मिठाइयाँ भी खा ली, सर what next, right? Lot of you must be worried about कि सर what next? Yes, someone is mentioning thank you sir for your motivational video. Thank you यार, that is my responsibility to help you out. Now it's my responsibility to guide you. कुछ लोगों ने ना नाम के आगे सीए लगा लिया, अगर रीनेम कर सकते हो तो लगा दो नाम के आगे सीए, कोई डरने की बात नहीं है यार, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप लोग। यस, यूट्यूब से भी काफी सारे लोग कनेक्टेड है। हेलो एवरीवन। यस 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 यस। Now today's session is very important because in today's session we are gonna be discussing from the perspective of सर सीए तो बन गया, ठीक है सर, मम्मी का सपना पूरा किया सर, बहुत बढ़िया, पापा का सपना भी पूरा कर लिया, पापा की परी भी बन गई अब मैं तो। Now what next? What is the thing which I need to work on? Sir, can you please help me? I started getting a job offers also, sir. And lot of my friend also asked me कि भाई तू रिटर्न फाइल करेगा आपसे मेरा, ठीक है? ऐसा किसी के साथ हुआ? Just write me in a chat box. Did any one of you got some offers, or if some of your friends have said that कि you are the someone who is going to be filing my return, or you are the person जो मेरा सब अकाउंट संभालेगा, राइट? नाउ पीपल आर लुकिंग एट यू फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यस यस यस, काफी सारे लोग बोल रहे हैं अच्छा अच्छा। उत्तम बोल रहे हैं सर मेरे साथ तो हो गया है। अच्छा, ऐसा तो कोई नहीं है किसी को शादी वादी का ऑफर आ गए, ठीक है? नहीं, अच्छा, आए हैं पर बताएंगे नहीं, ये सब समझ रहा हूँ मैं, ये सब स्ट्रेटेजी है आप लोगों की, ठीक है? यस, पूनम कह रही है हाँ सर मुझे भी आया है। अच्छा, कोई बोल रहा है सर आईटीआर रिटर्न का सीजन चल रहा है तो मैं तो 3-4 फाइल कर दूंगा। ओके, परफेक्टली फाइन। ग्रेट 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 ग्रेट। So great, yaar, really happy to see this. And trust me, the day I also become a chartered accountant, it was a completely turnaround in a journey. ठीक है? और एक अलग ही समा होता है, पीपल सी यू फ्रॉम द आईज ऑफ अ रिस्पेक्ट, ठीक है? और 3-4 दिन तो मम्मी भी पूछेगी घर पे कि बेटा व्हाट डू यू वांट, राइट? आज खाने में क्या बनाना है, राइट? एंड क्या चाहिए, तो ऑल दिस थिंग्स आर गोना बी देयर। बट today's session is very important because we are going to be discussing in terms of what next. Number one, क्या options available है being a chartered accountant? See this session, if you're missing, if any of your friends are missing, you can send them a link या उनको बाद में link share कर देना। Because होता क्या है, I'll also tell you my experience. I became a chartered accountant. I always want to get into teaching. मैं day one से बोलता हूँ कि मुझे teaching में जाना था, but मेरे को क्या था कि मेरे को pathway नहीं पता था, so I end up into the places जहां मुझे opportunity मिल गई। बट मैंने कभी रिसर्च ही नहीं किया कि शिवम देयर आर 9 डिफरेंट, 10 डिफरेंट, 15 डिफरेंट एरियाज वेयर यू कैन वर्क इनटू। मैंने आर्टिकलशिप में आज तक डीटी देखा है सर, इनकम टैक्स देखा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट देखा है और इंटरनल ऑडिट देखा है। आई फील सर दिस इज द ओनली एरियाज वेयर आई कैन वर्क इनटू, राइट? ये एक हमारे पता नहीं कोई लिटरेसी नहीं है या करिकुलम में भी नहीं है या जो भी कुछ भी बोलो, है ना? दिस इज वाज द रीजन वेयर आई लैंडेड अप इनटू अ वेरी, मतलब आई लैंडेड इनटू द प्लेस वेयर आई could have not there been into if I would have known the options in my life. अगर शादी में जाओ, देखो से फॉर एग्जांपल काफी लोगों के साथ हुआ होगा ये चीज, आई कैन रिलेट विद द शादी का एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल आप शादी में गए, ठीक है, और आपने एक कॉर्नर ऑफ शादी घुमा और वहां पे देखा कि यार ठीक है यार 4 ही इन्होंने आपने नाश्ते की चीजें रखी है और मिठाइयां नहीं रखी है, तो आपको थोड़ा सा बुरा लगता है। बट जब आप बाहर निकलते हो आपका दोस्त पूछता है तूने ये वाली मिठाई खाई थी क्या? आई वाज लाइक ये कहाँ थी, ठीक है, ये तो मुझे पता नहीं, तब बड़ा रिग्रेट होता है। अब वो चीज ना हो, दैट इज व्हाई वी आर गोना बी हैविंग दिस सेशन इन डिटेल। यस, डोंट वरी, विल कवर मोस्ट ऑफ द पार्ट इन इंग्लिश। हाउ आई कैन जॉइन अ जूम लिंक, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे जूम का लिंक आपको मिल जाएगा, तो यू कैन जॉइन द जूम लिंक तुषार वहां से। ग्रेट। Now, before I start in, the people those who have connected from a laptop, let's start from very basics of our interviews also, and let's start from some of the basics that what all things will be needed, how you're gonna be preparing, what all domains are available, right? Everything
in the next 1 hour of session, we'll try to cover it to the maximum, है ना? And we'll try to ensure that you properly understand these things out. And for that, you might require a pen and paper. प्लीज एसएफएम की जो नोटबुक बची है उसको यूज मत करना, आप नई नोटबुक खरीद लो यार, ये जीवन भर चलेगी. तो इफ पॉसिबल ट्राई टू हैव अ पेन एंड पेपर विथ यू गाइज, एंड इफ दोस आर कनेक्टेड फ्रॉम अ Zoom, I think more than 100 people are connecting, so I'll request you to please turn on your video so that I can guide you some of the basic stuffs of your interview preparations also. Okay, now very basic thing. Sir, do I need to connect from a laptop when I'm giving an interview? The answer is yes, है ना? Very basic thing, very basic question. Okay, sir, you need to connect from a laptop. Okay, now, sir, I don't have a laptop. What I'm supposed to do? Amazon 7 days written policy. You can follow this out. Okay, I hope people will get jokes. So sorry, Amazon. मैं कुछ नहीं बोला, ठीक है? You can also try this out. Now, sir, what if my laptop doesn't work? What I'm supposed to do? Or I don't have a laptop. Borrow it from someone. Not an issue. You'll also able to get a lot of websites from where you can get a laptop on rent. That's completely fine. Now, second thing, sir, what if sometimes my internet doesn't work, or what if my laptop is not working? Can I connect from a phone? The answer is ideally no. But if you don't have a choice, if you're connecting from a phone, you are supposed to keep your phone on a landscape mode. This is what a landscape mode is. ठीक है, पैसे मत देखो, फोन देखो बस. This is what a landscape mode is. ठीक है, and this is what a portrait mode. So landscape mode में you are supposed to connect your phone. Those who are connected from a phone can try this out and turn a auto rotate, so that your screen becomes bigger. सामने वाले को इंटरव्यू को he or she is able to see a bigger screen. ठीक है, तो those who are connected from a Zoom, आप साथ साथ में करते जाइए ना, तो आपका है प्रैक्टिस भी होते जाएगा, and you'll get handy to all those things out. Sir, but why you're telling all this? Because the interviews are gonna be in a virtual mode. Interviews are gonna be on a virtual mode. Guys, please do understand this. जो भी ICAI का भी brochure आया है, all the interviews this times are going to be on a virtual mode. So we need to prepare ourselves virtually for all these things out. Okay, next thing. Very important. A lot of you keep your video like this. Dekho, it's not like this. You need to keep and ensure that proper headspace is there. Just check your proper headspace. Okay. And just see that, are you able to show your hand gestures or not? You can see this. Are you able to show your hand gestures or not? एक बार ऐसे हाथ आगे जादू दिखा दो, right? Just see that, are you able to show your hand gestures? Yes, perfectly fine. And also see that if your laptop is 1 arm distance from you or not. Why? Because many people keep it very closer और बहुत ज्यादा दूर रख देते हैं. Just keep it 1 arm distance with you guys so that you can adjust it. So just test it, है ना, properly आपने उसको set किया है कि नहीं. This is very basic, interview basics है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, since you are gonna be sitting for hell lot of interviews nowadays. So we cannot afford to make a single mistake in our life, because foundation, है ना, 30-40 हजार खर्चा किया होगा. Intermediate, I don't know how much, and final, I don't know how much, right? So can anyone tell me the total cost which you have spent in your entire CA journey? By the way, just wanted to see कितना पैसा, दान तो नहीं बोलेंगे, but how much money you have invested. Around 2.5 lakh. Piyush is saying 2.5 lakh. Others, I just want you to see your numbers out. People from YouTube, you are supposed to put your numbers, how much money you have invested in your studies till now. Just wanted to see the numbers out. Oh bhai saab, ठीक है, approximately 1 lakh plus. Okay, less than 1 lakh. Okay, provided depends on the classes which you have taken, उस पर भी dependent होता है. But yes, बहुत ज्यादा. अच्छा, ठीक है. Now is a time where you're going to be nurturing all this money. Mark my words and trust me. Now is a time where you're going to be taking the ROI of all this, right? That is an investment which you have done. ठीक है, अब वो इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न लेने का अब समय आ गया. मतलब आम का झाड़ बन के तैयार है, फल बस आपको डिसाइड करना है कि भाई आफूस आम का फल चाहिए या बैगन फली चाहिए. आई होप पीपल कैन रिलेट दिस आउट द फ्रॉम महाराष्ट्र. डू यू वांट अ कॉस्टलीस्ट मैंगो और यू वांट अ चीपेस्ट मैंगो? यू नीड टू डिसाइड इट. It's going to be based on what type of tree or what type of things you have planted it out. Okay, because now is a completely different journey as compared to your previous journey out. अभी आप एक नई लाइफ को बर्थ दे रहे हो, which is regarding the interviews and all this. Now, yes, someone is saying 5 crore. नहीं भाई, इतना पैसा तो नहीं इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, but ठीक है, nevertheless we'll move ahead. Next part. Before I started, I'll ask you one question. There are 2 types of people which I interact after you become a chartered accountant. Always in my journey, I have been interacting with a hell lot of people. From past, I have placed more than 3,000 odd students. I placed the people in the company you name.
मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, आपको विश्वास नहीं होता, गो टू लिंक्डइन, मेरा बस प्रोफाइल आप चेक कर लेना और पोस्ट देख लेना, you'll be able to see the people from all the companies, है ना, सभी कंपनीज में I have placed the people out. Now what I'm telling you is that I have seen a two type of people. The first person who is interested to build his career, a second person who is interested to get a job. I'll tell you a difference between the two, and you need to tell me, sir, what do you want in your life? A person those who wants a job is a person those who wants to earn money after becoming a chartered accountant. Okay, if I am a chartered accountant, all of you are chartered accountant, really happy to connect with you guys. You are a CAs, right? Now you're a chartered accountant, you will tell me out either you want a job, that means you only want to earn a money, or you want to build a career. What does a career means? Career means that you will find a passion where you will work for your entire life और आपको कभी ऐसे थकान नहीं महसूस होगी. Point number one, you will find your passion and you will think and decide what you want to do in a career. That means even if it's not money, it's about what you like. And that is something which you can work for your entire upcoming life. So you need to decide now, कि sir, I want to build a career, or do I need to build a job, or I want a job, right? So I want you to put your answers in the chat box. Do you want, or are you thinking, कि sir, I only want a job, or I only want a career? What do you think? You just write it in the chat box. If you want a job, just write job in the chat box. And if you want to build a career, just write career in the chat box. Okay. So career doesn't mean that you're not going to be earning the money, guys. Career also means that आप वो करोगे जो आपको पसंद है, बट उसमें पैसा भी रहेगा. ठीक है. एंड जॉब इज समथिंग लाइक पीपल विल डू ओनली फॉर द मनी. ठीक है. आई एम ओनली गेटिंग द मनी आउट, इसलिए मैं कर रहा हूं. ठीक है. ओके. मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि सर आई वांट अ जॉब. I want a job. Someone is saying career plus money, perfectly fine. Someone is saying career with a financial stability, perfectly fine. Want to get into the top 10 CA firms, perfectly fine. Okay, I want a job first. Okay, I want a career. Got it. Okay, there are mix of all this, right? But most of you are saying, sir, it would be great if you could help me to build my career, right? And for that, we have a very detailed session today, which you will be having in next 2 minutes. I'll present my screen. I'll discuss the career pathways. ठीक है. पहले समझे तो सही कि कहां कहां हम जा सकते हैं. Then we'll discuss out how to get there, what is the procedure, how to prepare, and all this. Okay. Got it. Now, first thing. The first career pathway, I'll also present my screen and I'll also discuss in detail, right? First career pathway. Since a lot of you have done your articleship, lot of you, I'm wrong to say a lot of you, every one of you, I have done articleship, so sorry. Acha, lot of you were for the people, those who have done dummy, I've excluded them, but okay, I'm counting them also as completed as articleship. Okay, now, there are a lot of career pathways which you can go into. Okay, I'll go one by one. I'll discuss everything in detail, provided you are attentive to the session. जहां पे आपको चीजें भारी लगेगी, आप chat box में लिख देना. I'll be happy to take a pause and give you a guidance. Or if you have any queries, do not hesitate to put it on our chat box. ठीक है? Do not hesitate to put it on our chat box. Because ये session आपके लिए है. If you get to know at least 5 new things, my purpose for this session is completed. ठीक है? Let's go one by one. सर सीए कोर सर्विसेज, ओ माय गॉड, मेरे बॉस की याद दिलाने वाले हो आप मुझे. हाँ, राइट. सीए कोर सर्विसेज. व्हाट आर द कोर सर्विसेज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्क इनटू? Chartered accountant work into all these core services. First is auditing. Again, further divided into this: auditing, statutory audit, internal and forensics audit. Now I'll go in detail one by one. Okay, statutory audit, Indian versus global firms out. Okay, I'll also use my iPad side by side so that I can also guide you. Now I'll cover the auditing first. And auditing may is statutory audit, which is again divided into the Indian firms and global firms out. Okay. Now I don't know how many of you heard about the global firms. If you have heard, just can anyone write the name of the global firms in a chat box? Anyone has heard about any of the global firms? सुना है कि in statutory audit के लिए global firms होते हैं? Anyone please put it in a chat box. We'll be happy to read this out. Got it. Now, if you see, I divide the statutory audit
into two parts, Indian firms and global firms. Sir, but what is statutory audit? Audit which is required by statute. Okay, where you're going to be auditing the company's financials, you're going to be reviewing it, and based on that, you're going to be preparing the audit report, and based on which the auditor is going to be giving an opinion. Very simple. Now, abhi, lot of students are not aware about this. Even I was not aware about when I become a chartered accountant. So it's completely fine. There is an Indian firm, and Indian firms, if I talk about the big fours, right? Big fours are four, if everyone is aware of, right? EY, no, sorry, let's write KPMG, EY, Deloitte, and your PwC. Okay, so I was a part of EY India team where I have completed my articleship from EY, ENY. Okay, these are the Indian firms. If I talk about the global firms, similarly, the global firms are KPMG, KGS, EY, GDS, Deloitte, USI, and PwC, SDC. These are the global firms which are there. Okay. Now, sir, okay, I got to know that statutory audit is required by statute. I'll be working on auditing the financials. I'll review the financials. I'll review the control. I'll also prepare an audit report based on that. Okay. Now, there are some global firms which you mentioned. There are some Indian firms which you mentioned. Perfectly fine. Sir, but what is the difference between the Indian firm and a global firm? What is the difference between the Indian firm and a global firm, sir? Should I join an Indian firm? Should I join a global firm? Okay, sir, which firm is going to be giving me a higher package, sir? Can you please tell me? I'll tell you some basic questions. Now, the people, those who are getting offer from a global firms, why does this firms are called as a global firms? Because you people will be working on some of the global clients from a foreign countries. It can be either from US, UK, Philippines, Germany, Malaysia, Indonesia, any other countries which are there. Okay. And what you're going to be doing is that, say, for example, I am an auditor working at EY GDS. Okay. So I'll have my subordinate who is in charge of a EY GDS US office. I'm doing audit of US. I have a US client. So I'll have a subordinate from EY US office who's going to be assisting me. That's also there will be a client in US for which I'll be doing an audit. Okay. That means, sir, will I be allowed to go to the client location? Ideally, at the initial stages, no. But after 2 to 3 years, once your promotion is done and depending on your type of work, you might be sent to a client location on future dates. Okay. That opens your opportunity to move internationally sometimes. Now, sir, what does Indian clients mean? Okay. Same thing, but you're working on some of the Indian clients. So that means I'll be visiting a client place if I'm taking an Indian office. The answer is yes. Sir, will the working be more in the Indian office? The answer is yes. Sir, will the working be less in the global office? The answer is yes. Sir, will I be working on all the areas in the global clients? Mostly, say for example, let's assume, do you know the taxation structure of US? Anyone knows the taxation structure of US? किसी को पता है टैक्स कैसे लगता है? बताओ. Anyone has any idea? No, right? You don't have idea, right? And the company can't give you a taxation structure of US. It's very difficult for them, right? अगर पता ही नहीं है तो कैसे देंगे आपको taxation? The few areas which you are not aware of will be given to the guy, those who is working at a US office. That is not going to be given to you. That means few significant accounts which be handled by some of the US people, few significant accounts are going to be handled by the Indian people out. Okay. Now we'll have a detailed session on this, but I'm just giving you a hint of all the options available now. I can have a 3 hours of session on only on this. Oh my God. I can have a separate 3 hours of session only into this. Ki EY may be kaun se domains available hai. We can have the session. I don't have an issue. But I'll just give you a bird's eye view now. We'll have a detailed discussion some other day. But let's note it down the options which are available to me. पहले देखते तो हैं क्या क्या available है. शादी में जाते हो पहले तो what do? You just roam around and see what all sweets are available, right? खाते हो कि नहीं मिठाई, है ना? तो you just check. अच्छा पापा रसमलाई भी है. अरे हाँ बेटा रसमलाई भी है. खा ले पहले. ठीक है? तो again, you will check and see the options first. What I'm doing, I'm telling you the options. फिर उसके बाद आप देखना which options you feel like are good and then we can discuss it out. Okay. So first, what I've discussed is statutory audit divided into the two parts. One is an Indian firm, second is a global firm. Clear? Hai? Okay. I'll move ahead to the second part, which is okay. So again, there are big 6 firms which are there. BDU ka hai, right? So that is there. So don't worry. We'll have a discussion on all this. Second is the internal audit. What does internal audit means? So sorry, it doesn't feel like I'm delivering an option for lecture for audit. Hai na?
I am from audit background, but please do not think that I am delivering a lecture for audit. Right. So what does auditing means? Internal auditing means three important rule which you are doing as a part of an internal auditor. You will check the process. You will see the risk associated with that process, and you will see what all controls are available. Okay. मतलब simple सी चीज है. जैसे कि Flipkart is delivering a goods to a customer on COD basis. Very simple. Flipkart is delivering a goods to a customer on COD basis. What is the process? A goods are delivered by the Flipkart to a customer on COD basis. Okay. What is the process? Point number one is completed. Second, what is the risk involved in the process? Can anyone think of a risk involved in this process? Anyone, please? Anyone can write it in a chat box. I'll be happy to read this. What do you think is a risk involved in a process? A Flipkart is delivering a goods on COD basis to a customer. Loss of goods. बहुत बढ़िया. Who said this? Okay. You know, what loss of cash, right? Cash nahi mila, right? The goods never delivered. You know, supply chain issues, right? All these issues are there. So this is something which an internal auditor is going to be looking. He'll see the process. The internal auditor is expected to see what all risks are involved, and they need to address the controls. Okay. Now, mostly the forensic audit is an advanced version of an internal auditor, जहाँ पे they will be more involved towards the fraud detection. If I talk about the forensics, मतलब क्या fraud detection में आप थोड़ा सा ज्यादा involved रहेंगे. I don't know how many CID lovers in the house, है ना. सानुक्य कुछ तो गड़बड़ है there, right? So again, है ना, the forensics labs में भेजो and all this. So definitely that is something which is there. So I hope a basic two domains are clear. Statutory audit required by statute. Now statutory audit में there is also one more part which is a IFC, which is a part of a statutory audit, जहाँ पे आप controls का थोड़ा बहुत checking करते हो, but it's only a 20% of what internal auditor does. Okay. So basic auditing में statutory audit, internal and forensic audit. Okay. Now moving to the advanced version, and nowadays a lot of you must not be aware about this domain, is the FDD. Okay. How many of you have heard FDD before? If you've heard, just write heard, or if you've not heard, just write NA in a chat box. If you've heard, just write heard in the chat box. सुना है कि सुना है, लिख दो आज. So sorry, I'm not a brand ambassador of Nescafe, but ठीक है. I love coffee, so I am having it. How many of you have heard this FDD before? If you've heard, just write heard in a chat box. If you've not heard, just write NA in a chat box. Okay, got it. Most of you have heard it. Most of you have not heard it. Right. A lot of vacancies are there in FDD nowadays because it's a due diligence. What does it mean? Financial due diligence. For full form is financial due diligence. अब due diligence generally कब होता है ना? Due diligence, say for example, SAMBHAV has become a unicorn. Oh my God, great. That's happy to hear out. $1 billion valuation हो गया SAMBHAV का. Thank you. Now SAMBHAV decided to raise 100 crore of rupees. SAMBHAV decided, let's raise some money, you know, because we want to expand it into a lot of domains. You know? Thank you. Yes. Now SAMBHAV decided to raise 100 crore of rupees. Now SAMBHAV में जो भी पैसा लगेगा, supposingly you are investing 100 crore of rupees in SAMBHAV. ठीक है, जस्ट इमेजिन आपके पास बहुत पैसा है, पापा ने कल आपको 100 करोड़ रुपए दे दिए, आप सीए बन गए, पापा बोले क्या चाहिए, तुमने बोला 100 करोड़, पापा बोले लो जी लो अपनी जिंदगी. ठीक है, डोंट गो एंड आस्क योर डैड 100 करोड़ ऑफ रुपीस. आई एम गिविंग एन एग्जांपल. ठीक है, नाउ यू are investing into the CMO. Will you invest without looking into the same? No, you will say that I want to ensure that the CMO is running perfectly. I want to see the financials of the company. I want to overview the process of the company. That means you are doing what? A due diligence check. So you'll go to a financial due diligence and you'll ask them to give a due diligence report. Okay. And after that is done, based on the report which you are going to be giving or based on the FDD report which I'll be getting, उसके basis पे होगा company का valuation. Oh my God. मतलब कि जो मैं वैल्यूएशन निकालूंगा नंबर्स का is gonna be based on whatever value the CMO has derived, which is gonna be reviewed by the FDD guy, and the valuation team is gonna be relying on the report or the numbers which are issued by the FDD guy. Okay. In short, अगर हमको किसी भी चीजों का अगर फंडिंग उठाना है या मुझे किसी चीज का पूरा रिव्यू करवाना है, M&A डील हो रहा है, right? During all this time, the company needs to check that whether the financials of the company is running perfectly or not. And that is why we are going to be going for a due diligence. Okay. Now, after the due diligence is done, एक बार due diligence हो गया, इसके बाद बहुत सारे actions होते हैं. Either it go for M&A, valuation and all this.
So this is a very grooming areas nowadays. Lot of scope has been increased. Lot of people are getting into this. Sir, package FDD में ज्यादा रहेगा क्या statutory audit से? The answer is yes. Oh my God, sir, can you tell the package of FDD? अरे अरे अरे, पैसे की बात करें तो सब एकदम खुश हो जाते हैं. सब समझ रहा हूं मैं, पैसा चाहिए सबको. हाँ बेटा, ठीक है. तो FDD is mostly gonna be offering you 1 or 2 lakh higher as compared to the package which you got in the statutory audit. But that also comes with the toughness of an interview preparation. Say for example, if I rate a statutory audit ka interview on 6/10, I'll rate 8/10 for FDD. Oh my God, because एक्सपेक्टेशन भी तो वैसी रहेगी ना. अगर मैं पैसा ज्यादा दूंगा तो मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा ना कि कैंडिडेट को ज्यादा आए, राइट? तो दैट इज देयर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डोमेन. आई एम गिविंग यू द bird's eye view. We'll have a detailed discussion on each and every domain by the sessions which we are going to be planning. I hope you have registered yourself for all the upcoming events, guys. You cannot miss this. You cannot miss this. जो भी upcoming events है आपके लिए हमने create किए हैं, mentorship.samebhav.com पे जाओ, इवेंट्स पेज पे जाओ, और जो भी अपकमिंग इवेंट्स है, राइट, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर सीए, हाउ टू गेट इनटू बिग फोर, हाउ टू अप्लाई ऑफ कैंपस, हाउ टू फिल आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट्स फॉर्म, all those events are created for you guys. And I'm also expecting you to join the Telegram link on the WhatsApp group link which is shared in the description of our video, and I'll also share in the chat box here. ठीक है, May 22 CA के नाम से है, and you can join the same. ठीक है, तो I'll give you 30 seconds of time. फटाफट अब कर लो रजिस्टर, because I do not want you to miss this out. फिर आप बाद में बोलोगे कि मैं सोई थी, मेरे को तो पता ही नहीं था, राइट? यस, डन सर, डन. थैंक्स हिमांशु, रियली हैप्पी टू सी दिस. आपने कर लिया रजिस्टर. बाकी लोग भी फटाफट जाके रजिस्टर कर लो, सोचने की कोई बात नहीं है. आपको पूरा सपोर्ट करने का हमने कसम खाया है, आपको मदद करेंगे पूरी तरीके से. नेक्स्ट, वेयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक? व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको यूट्यूब वीडियो के नीचे जाके मिल जाएगी. यूट्यूब वाली जनता, आप वीडियो लाइक कर दो यार, अच्छा लगता है, हमको भी मजा आता है. ठीक है, विल डू आफ्टर द सेशन. डन, ओके, यस, याद से कर लेना. Now moving to the next part, sir, taxation. Taxation आजकल बहुत ज्यादा ग्रूम हो रहा है. Lot of people are getting a jobs into this domain. Okay. Now coming to the areas which are available for our taxation, I divide it into the 3 parts again, which is international and corp tax को मैं इधर ही डाल देना था. I have divided into 2 parts. One is a DT and transfer pricing, and second is a IDT. Okay. So I'll put it here only. So sorry. तो DT and TP, direct taxation and transfer pricing. आई डोंट नो, टीपी लवर्स इन द हाउस, बड़े गुस्से से आपने पढ़ा होगा, है ना, आपका टीपी. मुझे तो बड़ा डर लगता था डीटी पढ़ने में. सो डीटी एंड टीपी अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंड लॉट ऑफ गुड डोमेन्स हैव बीन नाउअडेज अवेलेबल. लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस. डीटी में नाउअडेज जीएमएस करके बहुत ज्यादा ग्रूम हो रहा है, व्हिच इज अ ग्लोबल मोबिलिटी सर्विसेज. व्हाट डज दैट मीन? कि जो भी फॉरेन की जॉब्स आ रही है, जो भी फॉरेन की टैक्सेशन रिटर्न फाइलिंग, and also the income tax return filing, companies return filing, and some litigation and guidance GMS में cover होता है. तो it's more about the global clients where you're working into. ठीक है. FS is the financial services side, where you will be a part of the financial services. What are the financial services areas? Like mutual fund house, है ना, the stock markets, or somewhere related to your NBFCs. तो ये जो FS side है, वहां पे आप उनका टैक्सेशन सिस्टम में देखोगे. ठीक है, तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, बिकॉज इसमें भी इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत टफ होता है. एफएस का टफ होगा, एंड एमएनए टैक्सेस अगेन विच इज अ टफर एरिया. ठीक है, इसके साथ साथ वी हैव आल्सो हैव अ सीआईटी. सीआईटी इज योर नॉर्मल कॉप टैक्स, वेयर यू आर गोना बी पार्ट ऑफ अ टैक्सेशन टीम. ओके, सो एमएनए टैक्स स्पेशली फॉर द पीपल दोज आर टारगेटिंग फॉर एमएनए लेटर ऑन. एमएनए टैक्स में जाना इजी है, मतलब एज कंपेयर टू स्टैट, मतलब आपको एमएनए दिखेगा नहीं वैकेंसी जल्दी, बिकॉज एमएनए वैकेंसीज आर गोना बी फिल्ड मोस्टली इंटरनली और थ्रू रेफरेंस. एमएनए आपको वैकेंसी बहुत जल्दी नहीं मिलेगा. वैल्यूएशन का वैकेंसी आपको जल्दी दिखेगा नहीं कहीं पे भी, बट एमएनए टैक्स आपको दिख जाएगा, बिकॉज अगेन पीपल विन टू एमएनए एंड टैक्सेशन डोमेन. बहुत नीश प्रोफाइल है, लोग कम मिलते हैं, सो अगेन यू कैन स्टार्ट योर करियर विद दिस. सीआईटी इज अगेन मोर अबाउट द टैक्सेशन पार्ट, एंड एफएस व्हिच आई हैव मेंशन्ड, एंड जीएमएस मैंने बता दिया. नेक्स्ट कमिंग टू द आईडीटी, इस इन दोनों के लिए बहुत चीज इंपॉर्टेंट है. आई विल देन कवर दिस. आईडीटी में आई हैव डिवाइडेड इनटू 3, है ना. सो वन इज जीएसटी, आई डोंट नो, आई हैव डिवाइडेड इनटू 2. हाँ, वन इज जीएसटी, सेकंड इज योर कस्टम्स, एंड थर्ड इज योर एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. ठीक है, so this are the domains which you are going to be a part of this. Now very important for the people those who are looking for job into DT and IDT. Anyone interested in getting a job into DT and IDT, just write me in a chat box. आज लिख दो, आज आप लिख ही दो कि सर मेरे को DT IDT में जॉब चाहिए, लिख दो. I wanted to see the people out.
If you're interested, just write me in a chat box. The people those are connected from YouTube यार please लिख दो यार. मैं देखना चाहता हूँ वो कौन लोग हैं जिनको जॉब चाहिए DT IDT में. खुशबू बोल रही है सर जॉब दिलवाओगे तो बात करूंगी, मैं नहीं तो बात नहीं करूंगी आपसे. ठीक है दिलवाएंगे आपको जॉब, आप क्यों टेंशन ले रहे हो. ठीक है. Yes, lot of you are looking for a jobs into DT and IDT. Yes, can you tell me a growth path? Now, whenever important, a big no. ये दिल से निकला है जिसने big no लिखा है भैया, इसने जबरदस्ती DT IDT पढ़ा है, मुझे पता है ना. तो that is there. Any government jobs for CA freshers? Yes, I'll again just have a separate discussion on the same because PSUs, government job, foreign jobs, एक अलग से session है, right? We cannot cover all these things, but I'll give you a hint. Okay. Now, the people those who are targeting for DT and IDT, please do understand one important thing. There are two parts. One is a compliance part and one is a litigation side of mostly for a DT and IDT. What does compliance means? I hope you are aware of. Articleship में बहुत compliance किया होगा आपने. भैया हमारा रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, कब करोगे कंप्लायंस. ठीक है. एवरी डे यू विल गेट अ कॉल और मोस्ट ऑफ द कंप्लायंसेस दिस इज व्हाट अ कंप्लायंस इज. ठीक है. सो सॉरी, प्लीज डू नॉट आस्क मी टू डू द एक्टिंग अगेन. यस है ना. तो दिस इज व्हाट अ कंप्लायंस इज ऑल अबाउट. नाउ सेकंड इज अ लिटिगेशन व्हिच इज अ मोर फन पार्ट, राइट. तो लिटिगेशन में आप जनरली आप लिटिगेशन हैंडल करोगे एंड इसके साथ साथ वन मोर पार्ट व्हिच कम्स इज द योर कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी. आई विल गिव यू अ हिंट. So when I was working with my old organization in the startup called as Udan, which is a unicorn, right? So that time we were implementing Udan logistics for our company. Okay. That time we need a consultation from the people out कि भाई अगर मैं logistics company बना रहा हूँ तो how does a taxation system is going to be flowing? It's not like a normal taxation because हमें पूरा एक consultancy और advisory चाहिए था कि क्या हमारी कंपनी उड़ान टैक्स बचा सकती है, क्या हम उसको सेव कर सकते हैं, कैसे प्लान करें, राइट. हाउ विल ट्रांसफर द इनपुट, कैन वी ऑटोमाइज द प्रोसेस, कैन वी एंश्योर दैट ई-वे बिल्स आर जनरेटेड एट द राइट टाइम. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम पार्ट ऑफ अ कंसल्टेंसी सर्विसेज. सो अगर मिलता है डीटी और आईडीटी में तो व्हेनेवर यू आर गेटिंग अ जॉब रोल इन डीटी एंड आईडीटी, प्लीज मार्क माय इंपॉर्टेंट वर्ड्स. कंप्लायंसेस साइड आप लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ यू लव दैट देन ओनली टेक मोर ऑफ अ कंप्लायंसेस साइड, अदरवाइज जस्ट सी मोर इनटू द कंसल्टिंग लिटिगेशन साइड बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच इज गोना बी एक्साइटिंग यू. समझो भाई, जीएसटी रिटर्न फाइल कर करके भी कितने फाइल करोगे, दैट इज गोना बी रिप्लेस्ड बाय सॉफ्टवेयर, राइट. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट वेदर यू आर गोना बी मूविंग टू मोर न्यूअर एरियाज एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डू. ओके. यस. कैन यू प्लीज समराइज द लास्ट 5 मिनट्स. नेट गॉट डिस्टर्ब. कोई बात नहीं यश, इंटरनेट यूट्यूब पे सब कुछ लाइव चल रहा है तो आप यूट्यूब पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे हमारा टैक्सेशन खत्म होता है. नाउ विल मूव टू द न्यू एरियाज व्हिच इज अ वैल्यूएशन साइड. Now valuation में which is again a new domain and a lot of you might not be aware about this. So valuation में again there are 3 major areas जिसका valuation होता है, either asset side, transaction side और goodwill. Okay. तो इसमें भी they have a separate teams, but again you need to find it, hunt your job out, है ना सर. कैसे करना, कैसे सीखेंगे, सब सिखाऊंगा, टेंशन मत लो. This is about the valuation side which I was referring to. So sorry, I'll continue presenting my chart. And next is the other services. Lot of services nowadays have been grooming into the SAP consulting, fundraising and certifications. ठीक है. CAs generally इन सब services में involved रहता है, which I am referring to. SAP consulting side आजकल बहुत ज्यादा groom हो रहा है. Most of the jobs you will be able to see nowadays for this, and a lot of companies like Wipro, Infosys, Accenture have started hiring for SAP consultancy. SAP consultancy also comes with the Oracle, Dynamics 365 and your SAP which I have mentioned. तो Oracle, Dynamics 365 and this SAP. 3 जो consultancy है for technology side have been nowadays grooming, where you are a part of implementation team or you're going to be part of a consultation team. Say for example, giving an example to understand in a better manner, SAMBHAV decided to have a accounting software. So ठीक है, SAMBHAV ने बोला कि let's have a SAP. Now I don't know about much about SAP, right? I'll go to the big giants who can help me out, right? I'll go to say for example Accenture, or I'll go to Infosys, or I'll go to PwC, right? I'll ask them, okay, can you help me out with implementation of this? They'll say yes, right? So they'll ask me what my requirements is, what all automations you want, है ना. And after that is done, they'll ensure that the software is implemented properly. Sir, but it's not easy, right? ये बहुत easy होता होगा नहीं, because see example देता हूँ. Flipkart, can you imagine the number of transactions Flipkart doing every day? Crores, right? बहुत होते होंगे.
Can you imagine how the Flipkart need to automate this accounting of a transactions? It's देखो automate करना पड़ेगा, नहीं तो फिर they cannot have 1,000 people, 2,000 people just to account the everyday transaction, right? And that is why you need some people out, those who can help you to automate this. Okay, so that is more towards the consultancy side of this. Okay, the SAP side, which many people were referring to. Okay, and the fundraising, definitely I think most of you worked in your articleship towards a fundraising एंड सर्टिफिकेशंस, जो सीए जिस चीज के लिए जाना जाता है ना, 500 रुपए लगेगा क्लाइंट के, बोलते होंगे ना आप लोग, है ना, तो सर्टिफिकेशन सचेस्ट है। ठीक है, तो अभी हमारा क्या क्या कवर हुआ है ना। तो ऑल्सो वन मोर साइड विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज दैट आईबीसी, लॉट ऑफ कंपनीज आर गोइंग फॉर आईबीसी। तो आईबीसी में भी लॉट ऑफ वर्क्स आर कमिंग, बट अगेन दिस इज अ नीश प्रोफाइल, बहुत नीश है, दिखेगी नहीं जल्दी आपको। ठीक है, दिस इज नीश, राइट, एमएनए साइड इज नीश, यू नीड टू रियली हैव अ गुड नेटवर्क and a people who can refer you out for all these roles. Okay, so these are the summary of what all things I have covered for a CA core services. If you want, you can take a screenshot of the same, है ना। CA core services का अगर आपको screenshot लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, insolvency bankruptcy code is a full form, right? ऐसा मत पूछो, IBC. Okay, you can take a screenshot of the same. Yes, I hope you all are enjoying the session. यार मजा आ रहा है तो लिख दो ना enjoy, मेरे को थोड़ा motivation दो ना। अगर if you're enjoying this, you can write enjoy in a chat box. That is something which will motivate me, right? Just write enjoy in a chat box if you're enjoying, if you're learning something new कि हाँ चलो सर कुछ तो productive सीख रहे हैं, clarity मिल रहा है, हाँ ये चीजें होती है। enjoying great। अपने दोस्तों को जरूर भेज देना ये वीडियो, बाद में ऐसा ना हो कि भाई सीए बन गया पता ही नहीं क्या करते हैं। ठीक है, got it, perfect, great time with you sir, thank you, really happy to see this. ठीक है, now in session is enjoyable. Okay, is enjoyable, getting to know new things, getting to have a good sense of humor. Yes, don't worry. Now moving to the next part, which is corporate. I don't know how many corporates were in the house कि सर मैं तो जाऊंगा 6 से 9 वाली जॉब में यार, I want a corporate guy, I'm a corporate guy, right? How many of you wanted to go into corporate? Sir, will all this session will be available on YouTube? The answer is yes, don't worry. Corporate guy, just write me in a chat box. I am a corporate guy. If you're a corporate guy, just write me in a chat box. और जो Zoom से connected है यार, आप अपनी शक्ल तो दिखा दो, हमें भी देखना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसे दिखते हैं, वो स्माइल कैसी होती है सीए बनने के बाद, हमें बड़ा मजा आता है सीए लोग से बात करने में यार। दिखा दो यार प्लीज, चेहरा दिखा दो यार, ऐसा ना करो। ओके, कॉर्पोरेट में काफी लोगों को जाना है, राइट? ओके, फील्स टू व्हाट टू कॉर्पोरेट लाइफ। ओके, नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट्स हर एक चीज पे कवर करेंगे, डोंट वरी। Corporates में I have divided into the parts, which is first is a leadership program. Many a times you will hear this, we are hiring for a management trainee role. Oh my God, what does management trainee means? Management trainee का मतलब पहले समझ लो। Management trainee means we are going to be hiring you because we want you to see as a CFO of our company in next 10 years. Okay, that is a management trainee. हम आपको ट्रेन ऐसा करेंगे कि आप पूरी कंपनी का मैनेजमेंट संभाल लोगे एक टाइम के बाद आके। That is what a management trainee is. Now, a red alert for you guys. What does red alert means? A red flag. Lot of companies hire with the name of a management trainee, but they don't train you for a management part. Oh my God. है ना, कुछ और ही करवा देते हैं because companies are there in a good position to give a fancy title. अच्छा, companies loves to give a fancy titles. है ना, अरे सच सच बता रहा हूँ, फैंसी टाइटल्स भाई, ऐसे ऐसे नाम से हायर करेंगे ना, आपको लगेगा कि गजब। एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी ने बोला विल हायर फॉर अ सीएफओ एडवाइजरी। हाय हाय हाय, मैं बोला क्या रोल होगा, मजा आएगा, सीएफओ को मैं एडवाइजरी दूंगा। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट वाज द रोल गिवन टू द पीपल? कैन यू गेस व्हाट वाज द रोल गिवन टू द पीपल? यू कैन जस्ट राइट इट इन अ चैट बॉक्स। पीपल हैव हायर्ड विद द नेम ऑफ सीएफओ एडवाइजरी, व्हाट डू यू थिंक? क्या काम करवाया होगा उनसे? यू कैन जस्ट राइट इट इन अ चैट बॉक्स। हाँ ठीक है, few people are able to think in, अब आप समझ गए। ठीक है, पेंटिंग नहीं करवाया यार, ऐसे ना करो, पेंटिंग थोड़ी करवाएंगे सीएफओ एडवाइजरी के नाम पे। ठीक है, आपको बैठा दिया इंडेस कंप्लायंसेस के लिए। ओ माय गॉड, ठीक है, इंडेस कंप्लायंसेस के लिए, बट ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन until and unless you are learning this out. But please do not go with a designation. I can give you any fancy designation. Please go with a job description. जीडी क्या बोलता है? नॉट जस्ट डाइल, अमिताभ बच्चन को याद मत करो, राइट? व्हाट डज जॉब डिस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट? ओके, सो दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड।
Next, coming to this leadership program, which is again as a CFO planning and management trainee, इन दो नाम से आपको हायर किया जाता है. Specific job roles, again, every corporates need to have their accounting body, every corporates need to have their treasury department, every corporates need to have their direct taxation, every corporates need to have their FP&A function, every corporates will not have a M&A department, but few corporates, those who are expanding, like Zomato, Byju's, right, all this might have a M&A department and indirect taxation. Okay, जैसे कि सीए मॉन्क ने कोई ट्रांजैक्शन किया, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, द आंसर इज यस. सिमिलरली कोई बड़ी कंपनी है, फ्लिपकार्ट ने कोई ट्रांजैक्शन किया, दे नीड टू रिकॉर्ड दिस आउट. नाउ इन अकाउंटिंग साइड यू माइट हैव अ रोल ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल व्हिच इज आल्सो लिंक्ड टू योर सेल्स. अगर कोई सेल्स हुआ तो विल हमारे कोई डेटर्स खड़े होंगे, राइट, व्हिच इज रिलेटेड टू एआर. एपी इज रिलेटेड विद योर इन्वेंटरी. GL is more inclined towards end-to-end accounting of the books. And one more team might be there which is responsible for MIS reporting. MIS reporting is monthly information system report which you need to prepare to give to an investors. जैसे कि आपने याद है थोड़ी देर पहले सीएमओंग में 100 करोड़ रुपए डाले थे, अरे याद है कि नहीं? ऐसे मुंडे हिला दो जिन जिन को याद है. हाँ हाँ, बड़े पैसे वाले लोग हो यार आप लोग. हाँ, तो थोड़ी देर पहले आपने 100 करोड़ रुपए सीएमओंग में डाले थे. यू विल आस्क मी कि शिवम, आई वांट टू सी द रिपोर्ट, आई वांट टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, राइट. 200 करोड़ डालेंगे, चलो ग्रेट. आई वांट टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. फॉर दैट यू विल आस्क मी अ रिपोर्ट, and which is again a part of the team which you can be a part of. So you need to prepare the monthly MIS system and monthly reports which is going to be shared to the investors. ठीक है, तो ये टीम्स हो सकती है. नेक्स्ट आई रेफरिंग टू द ट्रेजरी पार्ट. सो यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ ट्रेजरी टीम, जहां पे आप क्या कहते हैं, ट्रेजरी टीम में अगर इन्वॉल्व रहोगे, है ना, अगर यू आर गोना बी पार्ट ऑफ अ ट्रेजरी टीम, then you will be responsible for ensuring that proper working capital is there, proper cash management is there, are the things working in a proper manner or not. तो ये सब चीजें if you are going to be part of this, तो ये ट्रेजरी का रोल हो जाता है. ठीक है, ओनली फॉरेक्स डेरिवेटिव्स हेज करना है नहीं करना है, तो वो सब चीजों में है. बट अगेन आई विल से दैट ट्रेजरी में थोड़ा सा फाइट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अनदर डोमेन्स आउट. And you will always see a bigger fights in treasury department as compared to other departments out. ठीक है, तो that is there. DT अगेन कंपनी स्पेसिफिक हो गया. ऊपर हमने देखा था सीए कोर का, बट यहाँ पे ओनली फॉर अ कंपनी यू आर गोना बी लुकिंग. व्हाट इज FP&A, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस. इसको थोड़ा सा समझते हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस जैसे आपने जो कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, जैसे थोड़ी देर पहले से फॉर एग्जांपल सीएमओंक और फ्लिपकार्ट गॉट 100 करोड़ ऑफ रुपीस. नाउ फ्लिपकार्ट डिसाइडेड दैट व्हाई कांट वी ओपन अ रेस्टोरेंट चेन. Okay, why can't we open a restaurant chain by the name of Flipkart Restaurants? Okay, just imagine. Now they'll come to you guys and they'll say that, okay, Priya, can you help us out? Priya is in the FP&A team, so Priya ko bolenge, Priya, can you please help us out to guide how does or how we can expand our business into the restaurant chain domain? Point number 1. Point number 2, can you build some marketing strategy for our expansion of business? Point number 2, all the things which is related to the planning of financials. And you are going to be analyzing it based on the budgeted versus actual. जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरी कंपनी का सेल्स 500 करोड़ पहुंचेगा, एक्चुअल देखा तो 300 करोड़ पे था. व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दिस? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 200 करोड़. व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? व्हाट इज दिस? दिस इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस. आप चीजों को प्लान कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो और एनालाइज कर रहे हो और अपने इन्वेस्टर्स को और लोगों को बता रहे हो. This is again a grooming profile, niche profile से people fight for this, and this is again one of the good profile if you are targeting for, if you're good at costing and if you love doing this. ठीक है. Now again similar way में company will have a separate department for DT and IDT because यहाँ पे आप specifically company के regarding move कर रहे हो. तो now many people feel like sir, I want to get into the top notch companies, I want to get into this field, right, but I'm not getting a good companies out, या मुझे interview की calling नहीं आ रहे. There is one more entry barrier. There might be an entry barrier sometimes in top companies out. So there can be a via route. And what is a via route? You can start your journey with some of the big fours and then you can switch to this. I'm not saying that कि big four को preference मिलता है, but generally people थोड़ा सा biasness डाल देते हैं यहाँ पे, है ना. तो that is something which can help you out if you're not going to be getting this. So you can do 1 year, 2 years with big fours and then you can switch to this companies out. ठीक है. तो this is about the corporates, है ना. तो कॉर्पोरेट्स में मेनली अगर मैं बात करूं तो आप फाइनेंस टीम के पार्ट रहोगे एंड वेयर यू कैन हेल्प एनी वन ऑफ द ऑपरेशन. ट्रेजरी हो सकता है, डीटी हो सकता है, FP&A हो सकता है, M&A टैक्स हो सकता है. इंटरनल ऑडिट इज आल्सो देयर. आई जस्ट फॉरगेट दिस आउट. इंटरनल ऑडिट कैन आल्सो बी एडेड टू दिस. ठीक है, तो दिस इज द एरियाज, दिस आर द डोमेन्स व्हिच यू कैन वर्क इनटू. नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टार्टअप की तरफ. बट बिफोर वी मूव टू द स्टार्टअप्स,
just a small thing, right, which I want you to update on, right? Just a small thing. So I don't know how many of you are aware of this. Since we being into this industry, we being into the space, right? हम इस industry में for almost 2.5 years से हैं. We are training our students. We are helping our students to get closer to their dream jobs, right? So our next batch for our training workshop is starting from 20th July. ठीक है? आपके लिए बहुत कस्टमाइज किया है. You can see this out. The timings for the batch is 7 p.m. to 10:30. 10 है, right? For the evening batch starting from 20th July. ठीक है? तो that is one batch, and second batch is starting from 25th of July, which is a morning batch. जिनका ऑफिस रहता है उनके लिए. Now the sir question comes is कि इसमें क्या कवर करवाओगे? I'll tell you. If you miss any of the lectures, you can also visit or check in upcoming batches, which is completely free of cost. Point number one. Can I attend both the batches? Again, अगर आपका कोई लेक्चर मिस होता है आप अगली बैच में आ सकते हो. रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है सर, बट इसमें कराएंगे क्या? राइट, वी हैव अ वेरी डिटेल्ड करिकुलम फॉर दिस. यू कैन अगेन विजिट दिस आउट. Day one will be working on our resume building, cover letter. Sir, how cover letter is important? Lot of companies need the cover letter, and cover letter helps you to differentiate from others. Okay, what does that mean? It talks about why you should be hired for this company. Second thing, we'll have a group discussion practice. A lot of companies like Vedanta, Hero Motocorp are going to be having a group discussion. So we'll train you for all this. Day 3 and day 4, we'll have a personal interview round where we'll be talking about how to prepare for a personal interview, how to prepare for HR related questions, how to prepare for a technical questions. That is there. Day 5, we'll have a detailed session on our technical training. Day 6, we'll be talking about how you can apply for the LinkedIn and how you can apply jobs on off campus. And also with this, we have a very detailed curriculum in terms of how you can prepare for the domain which you're interested. So we have done a solution for all this. What we have done is that we have launched 9 different electives in this, and you can become an expertise in any one of the elective which is there. Sir, but I want to be understand about stat audit and internal audit. You can become an expertise in all this. I will tell you कि कैसे होता है session में, and how you can be a part of all the electives if you want to be a part of electives. So this is what a detailed curriculum about the GIR workshop. And a day 1 पे you will have a detailed session on resume building, okay, which is there. GD session day 2 पे. Day 3 PI session, and again you'll be having a specific mentor where you're going to be getting a mentor for your journey out. They'll guide you कि आपने कितने बार pause लिया, how you spoken out, how you need to improve, how you need to communicate, which is there. We'll also have a version test. A lot of global companies conduct a version test, which is there. How to apply on a jobs on LinkedIn, day 4 पे cover किया गया है. Day 5 very important session, salary negotiation. भाई अगर 10 लाख का salary है, how we can increase it to 12 lakh, right? That is there. Extempore basic technical questions, resume review, which is there. Day 5 में, day 6 में you'll be spending entire one day with the mentors out. They'll talk about how to prepare, how to crack the interviews out. They'll also discuss on the technical preparations. And day 7, you'll have a practice session for your technical session, GD, which is a case study base, and will guide you post GIR. Sir, is it only a 7 days workshop? उसके बाद आप help नहीं करोगे? The answer is no. We'll support you for all those things which are gonna be upcoming, right? जैसे ICAI कैंपस आएगा तो कैंपस का फॉर्म कैसे भरना, साथ में मिलकर भरेंगे. कौन सा लोकेशन चूज करना, विल गिव यू द लिस्ट आउट. नेक्स्ट, कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन इसके बाद स्टार्ट होगा. से फॉर एग्जांपल 4 कंपनीज शॉर्टलिस्टेड मी, आई विल हेल्प यू आउट टू प्रिपेयर फॉर ऑल द 4 कंपनीज आउट इन द कैंपस. ठीक है सर. व्हाट इफ आई मिस एनी ऑफ द सेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द सेशंस इज अवेलेबल. सर, अगर मैंने 2 लेक्चर इधर देखे, कैन आई वॉच द अपकमिंग लेक्चर्स इन नेक्स्ट बैच? आंसर इज यस. इसके साथ साथ यू विल आल्सो बी गिवन अ पर्सनल मेंटर फॉर योर रेज्यूम रिव्यू एंड पीआई, जहां पे आपका 1-on-1 मेंटर के साथ आप बैठ के अपना मॉक इंटरव्यू दोगे. एंड मेनी ऑफ देम आल्सो गॉट अ जॉब ऑफर्स इन पीआई आल्सो. तो क्या होता है कि आपको एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जो भी आपको इंडस्ट्री में जाना है, उस इंडस्ट्री के मेंटर के साथ आप पीआई सेशन देते हो. एंड इट्स लाइक अ नॉर्मल इंटरव्यू, जैसे आपका नॉर्मल एक्चुअल इंटरव्यू होता है उसी तरीके से होता है, राइट? वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 बैचेस पोस्ट प्री रिजल्ट, है ना. 3 बैचेस ऑलरेडी प्री रिजल्ट हो चुकी है, 22, 23 एंड 24. 25th बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 28th of July. Right, next batch will start from 25th, और उसके बाद वाली batches is going to be starting from 1st of August. Right, sir, how to enroll this? I'll tell you. Very simple. Right, go to camong.com. Once you go to camong.com, you will go to the placement tab. Once you go to the placement tab, go to live workshop. Once you go to live workshop, you will get a link here. Now, many of you feel that कि sir मैं तो YouTube से कर लूंगा. I'll tell you. Right, YouTube पे आपको बहुत सारे random videos मिलेंगे, but you need a personalized feedback from the mentors. You need a personalized feedback from the people out कि भाई मैंने ये चीज में ऐसे बोला, how many filler words I am speaking, right?
मेरे को किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, देयर आर पीपल फ्रॉम पैन इंडिया हु आर गोना बी पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप. ठीक है, दैट मीन्स यू आर गोना बी इंटरेक्टिंग विद अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट यू विल मेक 50 न्यू फ्रेंड्स, मार्क माय वर्ड्स. 50 नए फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. दैट मीन्स दिस 50 पीपल आर गोना बी रेफरिंग आउट. With this, we'll also have a CMONC placement program by the name of SAMBHAV. तो एक्सक्लूसिव ओपनिंग्स जो रहती है वी आर गोना बी गिविंग टू आवर जीआर स्टूडेंट्स, बिकॉज उन्होंने प्रिपेयर किया है, उनको पता है कैसे कम्युनिकेट करना है. ठीक है, तो दैट इज देयर. व्हाई डिड नॉट यू स्टार्ट अ बैच फ्रॉम 16th और 17th ऑफ जुलाई? बिकॉज रीजन सिंपल था, आप 2-3 दिन तो एकदम अभी उस जोन में हो कि आपको मजे करने हैं. अभी मैं आपको उठा के लेके आऊंगा तो आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे. नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज 25th को कैंपस प्लेसमेंट्स फॉर्म चालू हो रहे हैं जिसमें आपको रेज्यूम लगेगा. तो इफ यू आर गोना बी ज्वाइनिंग दिस बिफोर, राइट, तो आपका ऑटोमेटिकली रेज्यूम रिव्यू भी हो जाएगा और आपका ये चीज कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है सर, मॉर्निंग वाला 10:30 तक कंप्लीट हो जाएगा. द आंसर इज यस. कैन वी हैव अ मोर मॉर्निंग बैच? 1st of August से अपकमिंग नेक्स्ट मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच दोनों पैरेलली आएगा. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, जो आज रजिस्टर करेगा उनको एक और स्पेशल गिव अवे मिलने वाला है, राइट, बिकॉज कल से मेरा एक और बैच चालू हो रहा है फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग. तो दिल गेट अ स्पेशल कूपन फॉर द फाइनेंशियल मॉडलिंग बैच. ठीक है, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? जो आईबी साइड, कंसल्टिंग साइड टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरा फाइनेंशियल मॉडलिंग का बैच कल से चालू हो रहा है, मॉर्निंग बैच है, राइट, 7:30 to 10. तो दोज हु आर इंटरेस्टेड, उसको इसके लिए आपको एक कूपन कोड मिलेगा इफ यू रजिस्टर बाय टुडे ईओडी. अगर आप आज ईओडी तक रजिस्टर करोगे तो आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए कूपन कोड मिल जाएगा, विच इज अगेन गोना बी हेल्पिंग यू आउट. कैन द टाइमिंग्स भी चेंज? द आंसर इज नो, बिकॉज ये ऑफिस वाले स्टूडेंट्स का ज्यादा ध्यान रख के हमने बैच बनाया है, राइट. और अगर आपका कुछ मिस आउट होता है तो आप रिकॉर्डिंग्स उसके चेक कर सकते हो. आई डोंट हैव अ इशू, राइट. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 day कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन होगा. द पूजा आंसर इज यस, वी हैव अ मेगा प्रिपरेशन बूट कैंप. ठीक है, तो मेगा प्रिपरेशन बूट कैंप इज मोर लाइक कि आपको कंपनी स्पेसिफिक मेंटर्स आएंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे होगा, राइट. वॉक-इन्स ग्लोबल फर्म्स हैव स्टार्टेड, शेल वी वेट फॉर अ कैंपस? देखो, अब आपको डिसाइड करना है कि अभी प्रिपेयर करके इंटरव्यू देना है या ऐसे ही देना है. ठीक है, इफ यू गो इन दिस वे एंड इफ यू गेट रिजेक्टेड, ट्रस्ट मी, जो कॉन्फिडेंस यहाँ पे है ना वो नेगेटिव पे आ जाता है. ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि भाई 10 दिन रुको, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं नहीं जा रही जॉब्स. थोड़ा सा प्रिपेयर करो, रेज्यूम बनाओ, गिव अ मॉक इंटरव्यूज, गिव अ जीडीज, एंड द टाइम यू आर गोना बी प्रिपेयर्ड, तब देके अलग ही मजा आता है. I am saying that why are you targeting for the small companies? Or let's target for the top notch companies in this world, because I am a chartered accountant. Now I know that यार मेरे पास वो skills है. Only I need to brush this up. ठीक है, तो that is something which I want you to say. I am getting a lot of message from people out. What to do? Ignore. ठीक है, तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना. आप एक चीज समझिए, lot of people are gonna be asking you to join this. A lot of people are gonna be asking from, especially from few firms out, because आप समझिए रेफरल बोनस कंपनीज में 70,000 तक के जा रहा है आजकल. अब उसको अपना रेफरल चाहिए, आप समझिए, और वो आपको फंसा देगा भाई. मैंने लिटरली देखा हूं लोगों को रोते हुए. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग आउट, बट यू नीड टू डू अ डिटेल रिसर्च. जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये डोमेन्स है, आपको पता भी नहीं था कि भाई एफपीए नाम की चीज होती है. सी, द मोर यू एक्सप्लोर, it should not be like because I want the money, I'm rushing the things around and I'm taking a wrong job. More important is, are you able to justify yourself? Are you able to get what you want to? Number one. And number two, are you satisfied with what you want to get? If that is the case, well and good. If that is not the case, then again you need to think कि सर मैं सही जगह जा रहा हूँ कि नहीं. बिकॉज अभी नहीं जाओगे तो पक्का है कि 2-3 साल बाद फिर से जॉब चेंज करोगे एंड यू विल स्टार्ट क्राइंग दिस आउट, राइट. So that is there. I will share the link on the chat box. Few people are asking me to share the link in the chat box. You can go to it. You can register it by today, so that if you want a coupon code, you can again get a coupon code for the financial modeling course. Personal guidance होगा? The answer is yes, है ना जय. पर्सनल गाइडेंस होगा, आपको मेंटर मिलेगा बकायदा. ठीक है, आप मेंटर के साथ बैठोगे, आपको मेंटर मिलेंगे, मेरा गाइडेंस रहेगा, मेरा सपोर्ट रहेगा, हमारा ग्रुप्स है, राइट. हमारे पास आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट. और मेरे को कभी कनेक्ट कर सकते हो, है ना. हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो. दैट इज नॉट एन इशू. सर वांटेड टू टॉक टू यू ऑन अ कॉल फॉर अ पर्सनल गाइडेंस. मेरे को एक बार मैसेज कर दो आपका नंबर, मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा. ठीक है, यस. सो दिस इज व्हाट अबाउट अ ट्रेनिंग वर्कशॉप इज. आई वांटेड यू टू गेट अ गाइडेंस, बिकॉज ये हम लोग हर अटेम्प्ट में करते हैं, और अभी तक के 24 बैचेस हैव बीन कंप्लीटेड. यू कैन टेक अ फीडबैक फ्रॉम एनी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर प्रीवियस बैच. ठीक है, लिंक्डइन पे चले जाना, अगर आपका दोस्त भाई होगा तो उनको पूछ लेना, या आपको कहीं पे दिखेगा, कहीं पे लिंक्डइन पे #GIR करके भी सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा आपको. ठीक है, इतने ओपनली, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम वेरी लॉन्ग.
ठीक है, तो आई नो दैट हाउ द थिंग वर्क्स एंड हाउ वी कैन इंश्योर दैट यू कैन गेट इनटू द राइट प्लेसेस. ठीक है, ग्रेट. तो दोज आर इंटरेस्टेड कैन रजिस्टर इट टुडे बिकॉज 20th से अगला बैच चालू हो रहा है. तो दैट इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू गाइड यू. Now, moving ahead for our next part, which is a startups. Yes, startups के बारे में बात करते हैं. तो startup में भी again very important, जिसको startup में जाना है ना, मैंने एक बहुत बढ़िया सा सेशन दिया था YouTube पे, how to get into a startups. बट इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, you need to check that कि startup में कौन सा funding cycle चल रहा है. Say for example, whenever the startups are gonna be raising a funding, that time the startups are gonna be hiring. It's a simple rule. इट्स अ वेरी सिंपल रूल. जब जब फंडिंग रेज होगा तब तब स्टार्टअप हायरिंग करेगा. ठीक है, अभी फंडिंग फ्रीज है तो लॉट ऑफ स्टार्टअप हैव फ्रीज देयर हायरिंग आउट. ठीक है, तो दैट इज देयर. स्टार्टअप विल आल्सो हैव अ फाइनेंस फंक्शन, एफपीएनए फंक्शन एंड अदर फंक्शंस व्हिच इज सिमिलर, बट आई वांटेड टू हाईलाइट ऑन द फंडिंग पार्ट. नेक्स्ट, कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच इज अ फाइनेंस एंड बैंकिंग. ओके, नाउ फाइनेंस एंड बैंकिंग में लॉट ऑफ जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड दिस डेज इनटू द बैंकिंग साइड एंड एनबीएफसी साइड, और लॉट ऑफ बैंक्स आर गोना बी ऑफरिंग यू दिस. Now, please do understand this. Banking और NBFCs किस तरीके से वर्क करते हैं? Banking takes a deposits and give loans, right? So either you can be a part of a loan side or you can be part of a security side. But mostly, I have seen the people are hired for this two role. One is a credit manager and second is a relationship manager. Credit manager क्या करता है? Credit manager is responsible to check the loan approvals of the company. Credit manager is responsible for ensuring that the loan is passed to the people out, and relationship manager is responsible for bringing the new businesses. Okay, so if you are a relationship manager, आपसे expected रहेगा कि आप नया businesses लाओ. Say for example, CMONC is a big client. CMONC has decided to raise 200 crore rupees, 100 crore of rupees. आपसे अभी मैं raise कर रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, तो आपने पैसा कहीं तो रखा होगा ना, right? अब वो रिलेशनशिप मैनेजर आपको गाइडेंस देगा, राइट? या रिलेशनशिप मैनेजर विल आल्सो हेल्प यू आउट कि सर ये सब सर्विसेज हमारी बैंक देती है ना. वो बोलेगा कि सर इसको आप एफडी बना लो. ऑल दोस थिंग्स रिलेशनशिप मैनेजर के अंडर आता है. नेक्स्ट एज अ कॉर्पोरेट फाइनेंस फंक्शन, अगेन बैंक्स का भी कॉर्पोरेट साइड रहेगा, है ना. तो बैंक्स को भी अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करना होता है, व्हिच इज देयर. ट्रेजरी साइड इज वेरी स्ट्रांग इन अ बैंकिंग सेक्टर, व्हिच इज देयर. ट्रेजरी साइड में यू माइट गेट अ पैकेज समवेयर अराउंड 15-16 लाख. अच्छा पैकेज मिलता है अगर ट्रेजरी मिला तो बैंक्स में. ठीक है, तो दैट इज देयर. And next is a transaction processing, because I don't know how many of you are aware about this. Banks charge on a per transaction or per loan. जब लोन पास होता है तो 2%, 1% प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं ना, तो अगेन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम. इंश्योरेंस कंपनीज, राइट? तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट एंड रिलेशनशिप मैनेजर, फाइनेंस टीम एंड इन्वेस्टिंग टीम ऑफ अ सरप्लस फंड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज. जैसे कि बैंक्स के पास बहुत सारा कैश होता है, बैंक्स नीड टू इन्वेस्ट दोस कैश. Similarly, insurance company also have a hell lot of cash, so you can also invest into the insurance into the companies. So you can be a part of the investment team. Next, coming to the very important, which is a IB side, है ना, investment banking side. Investment banker, what does investment banker means? Investment banking मतलब होता है कि I am gonna be investing the money, or I am gonna be helping the people to invest the money, or I am gonna be helping the people, those who wants money, right? And I am providing what? I am providing some of the services to them. Okay. Now it can be a two part. Simple. फिर से मैं तुमको बड़े सिंपल से समझाता हूँ. There are two sides of investment banking. One is a buy side, one is a sell side. I'll use iPad so that you can understand in a much better manner. ठीक है, एक बार मैं iPad से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ जाए. Just a second. Let me present my screen. आजा भाई आजा. Okay. Perfectly fine. हाँ, एक सेकंड दो. I'll insert a new page. Now, in IB, there is a two side which I saw as a buy side and sell side, right? Now, buy side means there are the buyers available, okay, and sell side means there are sellers available. ठीक है, तो now अभी मैं CMONC को बोला कि CMONC needs a funding, right? That means I am ready to sell my shares to you guys. So CMONC is on a sell side. You are ready to invest 100 crore of rupees. You're on the buy side. Okay, you're on a buy side. ठीक है. Now you decided that okay, I need to invest 100 crore of rupees into CMONC. Okay, that means you are a buyer who is gonna be buying the shares of CMONC. But is it very easy to find a clients like this? The answer is no. You need someone to connect with you guys, and you need an investment banker who is gonna be helping you out to connect with the people out. Okay, so investment banker is gonna be connecting the people. Now, investment banker will give some separate services to the buyers as well. Say for example, आप अगर आपके 100 crore थे,
So you can invest into debt, you can invest into equity, you can invest into the other funds out, right? You can invest into FPOs, you can invest into IPOs, you can invest into share markets, right? All those things, all those functions can be there. And again, based on this, we have a division of 3 offices: front office, back office, and middle office. I'll not go into this as of now, but to explain it as simple words, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर रहेगा उसका या तो एक बाय साइड पे काम हो सकता है, और he can have a work over a sell side, or he or she can have a work on both the sides. Okay, now say for example, यहाँ पे ले लेते हैं, प्रिया के पास बहुत पैसा था, प्रिया के पास 100 करोड़ रुपए थे. Priya wants to invest this out. She went to an investment banker called as a O3 Capital. Okay, she went to O3 Capital. She said that, okay, I have 100 crore rupees. I want you to tell me the opportunities which are available. Okay, I want you to tell me the opportunities which are available to invest. Okay, I am an investment banker. I'll tell you. Okay, CMO is looking for a fund. You can invest, or I can tell her, okay, you can invest into the equity markets which are there. Now, once you move for an equity side, many of you must have heard about equity research is again one of the domain which many of you might get into. What does equity research means? You're doing a research about the companies and you'll tell to the people out where to invest. Okay, that is an equity research side. And in short, many people, those who are interested into this, right, either into trading or into buy side, sell side, good at SFM, good with numbers out, you can go for the IB side of your role. Next, management consulting. Okay, next is the management consulting. Management consulting पे I have covered a very detailed video for 1 hour. बहुत प्यारा वीडियो है, trust me, you're gonna be enjoying this. I'll tell you, वो वीडियो अगर आपको मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाना है ना, I will request you to please check that video because that is one of the best video which I have again delivered, right? तो I'll tell you कहाँ पे मिलेगा आपको, right? बहुत ही प्यारा वीडियो मैंने डाला है मैनेजमेंट कंसल्टिंग पे, ठीक है? Once you go to YouTube, है ना, once you go to YouTube and you put a channel name, है ना, आप मेरे channel name में डालोगे, इसको सब्सक्राइब भी करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. Once you go there, you will be able to see a very good video on case preparation. This is a video which I want you to watch. If you want to get into the management consulting, and I don't know how many of you are aware of, BCG और Bain का hiring start हो चुका है, right? These are the top-notch consulting firms. People dream to get into these companies. Right, तो ये वीडियो आपको देखना मस्ट है if you want to prepare for and understand what management consulting is all about. I've covered this in very detail about the consulting. ठीक है, all the sessions which I'm conducting are going to be value addition for this, and trust me, you'll learn every new things in this session. Okay, so that is something which you're supposed to check it out. And also request you to subscribe the channel because a lot of important updates related to placements, training, interviews, and all this I'll be sharing with you guys. Coming to the last and most important part, which is off-bid track. What does off-bid track means? Many people feel like, sir, CA to ban gaya, but I want to work in a public policy. You can go for the same. You can work into the arts. You can work as a CA tutor. You can work as a social service. ये सब चीजें आप कर सकते हो, right? There are also other areas or the domains which you can work into if you are interested for the same. That means I wanted to tell you that major things, to summarize this, to major things. First, decide कि भाई मेरे को CA core services करना है क्या. It's very simple. Let's take a decision. Let's understand in detail to summarize the entire discussion. Sir, I got to understand that CA की कुछ services होती है. क्या मुझे ये CA services में जाना है? ठीक है, सर मैंने आर्टिकल ऑडिट में किया था, मुझे उतना मजा नहीं आया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ. This is not my field. Then see what all excites you out of this, and try to start canceling the things which you feel like you don't want to get into. Okay, try to cancel out the things which you don't want to get into. फिर बचेंगे कुछ things जिसमें आपको डाउट्स होंगे, जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए होगा, ठीक है? तो that is something which you need to find it out. If you are going to be part of a GIR में आपको मेंटर मिलेंगे, सेशंस होंगे, वहां पे सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. अगर नहीं है तो फिर अगेन you need to do a research on your own, you need to invest a time, you need to find the people out who can guide you. ठीक है, तो that is there. इसमें से आप चूज करो कि आपको कौन सा एरिया नहीं जाना है, और उसके बाद आप देखो कि भैया मेरे को सीए सर्विसेज में ये चीज करनी है, कॉर्पोरेट्स में जाना है, स्टार्टअप में जाना है, बैंकिंग में जाना है, कंसल्टिंग में जाना है, या ऑफ-बिड ट्रैक्स करनी है. एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल डिसाइड दैट कि सर दिस आर द ऑप्शंस व्हिच आई हैव इन माय करियर. ओके, तो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू टेल एंड अंडरस्टैंड अबाउट द सेशन, बिकॉज many of you must not be aware of the domains and the areas which are available to you. And I've also summarized this entire discussion, right, which is going to be based on this. Now coming to the last part, which is
अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ आई विल डिसाइड विच एरिया टू ज्वाइन इनटू और विच ऑल प्लेसेस, हाउ टू डिसाइड कि मेरे को कहाँ जाना है. ठीक है. डिसाइड बेस्ड ऑन एंजॉयमेंट, क्या मजा आ रहा है काम में. डिसाइड बेस्ड ऑन हाउ मच मनी यू आर गोना बी अर्निंग. डिसाइड वेदर यू गोना बी डिफरेंस मेकिंग अ डिफरेंस. डिसाइड बेस्ड ऑन द पावर टू गिव अ डिसीजन, कि आप एज अ क्लेरिकल काम कर रहे हो या आपको पावर भी मिलेगी काम करने के लिए. ठीक है. और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो गो विद द फ्लो. एंड ऑल्सो यू कैन सी कि हाउ इंडिपेंडेंटली आई विल बी वर्किंग ऑन द क्लाइंट्स और हाउ इंडिपेंडेंट आई विल बी इफ आई एम वर्किंग ऑन दिस. These are the points which you need to understand before you take a decision for your career. Right. So this is what the session was all about. Right. I hope that कुछ तो सीखे होंगे, कुछ तो नया सीखने मिला होगा, कुछ new learnings you must have got. Right. कुछ तो सीखा होगा. अगर सीखा है तो यार कुछ तो बता दो हमें chat box में कि did you enjoyed the session or did you not enjoyed the session. You can just put it in a chat box. Then we'll open a forum for 2-3 doubt session. Yes, so sorry, chat was disabled. Yes, chat is enabled now. है ना. आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, मजा आया कि नहीं आया. मजा आ गया. यस सर. संडे को सर हम सेशन बैठ के अटेंड कर रहे हैं सर, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको. चलो ग्रेट, रियली हैप्पी टू सी दिस. इक्विटी रिसर्च पे जया एक सेपरेट सेशन लेंगे हम लोग, टेंशन मत लो, सेपरेट सेशन लेंगे. आई हैव ऑलरेडी ज्वाइन द जीआईआर. प्रियंका ग्रेट, आपको जीआईआर में मिलेंगे. राइट. मजा आ भी गयो, गजब. हाईली इंसाइटफुल सेशन. बहुत टाइम बाद सीए के बाद ऐसा लगा कि पूरा नया कुछ सीख रहे हैं. राइट. चलो ग्रेट, हैप्पी टू हियर दिस आउट. यस. और किसी को कुछ डाउट्स है, अगर डाउट्स है तो आप इस पे चैट बॉक्स पे डाल सकते हो. वेरी इंसाइटफुल सेशन, वेरी नॉलेजेबल सेशन. थैंक यू सर. आई गॉट अ मैसेज. ओके ओके ओके, ठीक है. थैंक यू. फाइनेंस साइड पर रिक्वेस्ट टू मोर डिटेल. ठीक है, विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दिस. आपको जो जो चीज पे सेशन चाहिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सीएम ऑन्केट प्लस ऑल्सो May 22 CA आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कीजिए. उसमें आपके लिए सभी वो इंपॉर्टेंट अपडेट्स डाल दिए जाएंगे. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है. ओके. व्हाट्सएप ग्रुप नॉट एक्टिव. अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप वन साइडेड कम्युनिकेशन के लिए रखा है, इसलिए नहीं है. ज्वाइंट सर, नॉलेजेबल, परफेक्टली फाइन. वेरी लिमिटेड ऑप्शन पता थे. ओके. इन क्रेडिट मैनेजर रोल, क्रेडिट मैनेजर का मैंने एक आईसीआईसीआई का वीडियो डाला हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो, उसमें आपको क्लैरिटी और मिलेगा. यस 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 यस. और कोई डाउट्स मैं चेक कर रहा हूँ. विल बी प्रोवाइडेड विद अ मटेरियल फॉर अ टेक्निकल राउंड. यस, हर वो मटेरियल आपको टेक्निकल राउंड के लिए, मॉक इंटरव्यूज और आपको पर्सनली मेंटर आपको बताएंगे कि आप टेक्निकल राउंड के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, तो वो सब चीजें कवर होगा वहां पे, टेंशन मत लो. शुड वी अप्लाई फॉर अ मेंबरशिप नंबर बिफोर द आईसीआई कैंपस. करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है. शेयर मार्केट ट्रेडिंग रोल, वो इक्विटी रिसर्च साइड आ जाता है आपको, अगर शेयर मार्केट ट्रेडिंग रोल साइड में जाना है तो. यस. व्हाट एल्स इंटरनल ऑडिटर का करियर ग्रोथ वे. देखो, इंटरनल ऑडिटर कैन स्विच टू फाइनेंस और दे कैन स्विच टू स्टैट एफडीडी और दे कैन बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और दे कैन बिकम अ डायरेक्टर और पार्टनर इन द कंपनीज आउट. फाइनेंस रोल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाए, बिल्कुल बनाएंगे, आप टेंशन ना दो. सर व्हाट विल वी हैव अ सेशन ऑन रेज्यूम डिजाइनिंग. यस, डे 1 सेशन रेज्यूम बिल्डिंग, फिर उसके बाद आपका रेज्यूम रिव्यू होगा बाकायदा मेंटर के साथ बैठ के 1-on-1. ठीक है. तो अगर आपका रेज्यूम अच्छा भी नहीं बना है तो आपको फिर से बनवाया जाएगा पूरा स्क्रैच से, टू एंश्योर दैट विल हेल्प यू आउट. विल हैव कैन वी हैव सम क्वेश्चंस, कैन सम इंटरव्यू क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड इन जीआईआर. अरे सब कुछ मिलेगा इंटरव्यू रिलेटेड. ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन जीआईआर. है ना. कैसे जाना, कौन सी कंपनी में जाना, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस क्या होंगे, एचआर क्वेश्चंस क्या होंगे, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ, उसके आंसर भी मिलेंगे और ये भी बताया जाएगा कैसे बोलना है. ठीक है. हाउ टू गेट इनटू द फाइनेंस जॉब बिफोर क्वालिफाइंग. हाउ टू गेट इनटू फाइनेंस जॉब. सो यू नीड टू कीप ऑन अप्लाइंग ऑफ कैंपस, बिकॉज कैंपस तो अभी नहीं होगा अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड. Yes, what else? I have experience in statutory audit, but I want to apply for TP. How to justify in resume? हाँ, तो इसके लिए हमने कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाया हुआ है. जो भी स्टूडेंट्स है, राइट, जो जीआईआर में करते हैं उनको एक लाइव असाइनमेंट मिलता है, भले उनका आर्टिकलशिप डमी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको एक इंडस्ट्री का असाइनमेंट मिलेगा, वो असाइनमेंट आप सॉल्व कर लो, आपके रेज्यूमे में वो असाइनमेंट आ जाएगा, है ना, विच इज गोना बी जस्टिफाइंग दैट कि आपको कुछ तो काम आता है. दैट इज वन थिंग. सर आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम लिंक्डइन. ठीक है, वो अब मैं कर नहीं सकता हूँ. शुड आई वेट फॉर माई टेक्निकल. यस, मैं बोलूंगा प्रिपरेशन करके दो भाई, प्लीज डू अंडरस्टैंड, बिकॉज लॉट ऑफ कंपनी माइट ब्लैकलिस्ट यू इफ यू आर गोना बी रिजेक्टेड. ठीक है, तो हम वी कैन नॉट अफोर्ड टू गेट रिजेक्टेड. राइट, अब बन गए यार सी, आप फटाफट इंटरव्यूज क्रैक करना है. आई रजिस्टर्ड फॉर जीआईआर. ओके. पेमेंट डिडक्टेड, नो कंफर्मेशन टिल नाउ. आपको मेल आ जाएगा नैन, है ना, टेंशन मत लो. आपको मेल नहीं आया है तो आप हमारा सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैं नंबर दे देता हूँ टीम का. अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप उनको बेझिझक कभी भी कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम हमेशा आपको खुशी खुशी हेल्प करेगी.
ठीक है, मैं एक बार नंबर दे देता हूँ। हमारी टीम के नंबर आपके सामने चैट बॉक्स पे डले हुए हैं। आज तो टीम शायद छुट्टी पे होगी, संडे है बिकॉज, तो कल आप उनको कभी भी कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप ड्रॉप कर देना, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ठीक है, यस, व्हाट एल्स सर, प्लीज टेल मी हाउ टू व्हाट टू डू इन केस वी डोंट गेट अ जॉब ऑफर्स इन आर इंटरेस्टेड फील्ड। अरे अभी तो रुक जाओ, अभी हमारा ऑफ कैंपस का जो सेशन होता है ना जीआईआर का, तो उसमें हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे। और दूसरा है कि आपको सर्च करते रहना पड़ेगा यार, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके सामने खुद से आएगी जॉब चल के, राइट? कुछ आएगी बट अगेन जो आपको चाहिए वो आना चाहिए, तो काम की ना। सर, डू इंटरनल ऑडिटर्स हैव अ career growth? The answer is yes, which I've already mentioned. Can we have a GR session which ends before 9:30 as it's clashing my office timing? तो जो कुछ क्लैश हो रहा है तो आप उसको रिकॉर्डिंग में देख लो, दैट इज व्हाट आई कैन से। यार अब तो सीए बन गए, थोड़ा सा बोल दो कि सर बॉस है, मतलब प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर। सर, आई हैव एनरोल्ड फॉर 25 बट व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इज फॉर 26। डोंट वरी, वो शिफ्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर, फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो वर्कशॉप है स्टार्ट हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन के एंट्री के लिए हेल्पफुल होगा? द आंसर इज यस। कैन आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, मुझे एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर लो, मैं कनेक्ट कर लूंगा। सर, आई वॉन्ट टू गेट इन टू द फाइनेंस रोल इफ we do not have any rank at that level. Yes, you can get into the same, but provided you know how to speak and how to crack the interviews out. Yes. Okay. Got it. Any other doubts which are there? Any other doubts? Last 2-3 doubts I'll try to cover. Don't worry, हम लोग के सेशन होते रहेंगे यार, इतनी जल्दी आपको छोड़ेंगे नहीं. We'll try to ensure that you are going to be placed to your dream companies out. ठीक है? Yes. So great, guys. I hope the session was really helpful for you guys. ठीक है, and I hope everyone has gonna be enjoyed, right? एंड अगर कोई भी दिक्कत हो, राइट, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे हम लोग इस क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई क्वेरीज है, राइट, रिगार्डिंग अ जीआईआर वर्कशॉप, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। टीम का नंबर मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, यस, सी यू इन द जीआईआर सेशन। ग्रेट, विल सी यू इन द जीआईआर सेशन। ओके, so great guys, thank you. You can share the feedback of the session in a chat box. Really happy to meet you all guys and enjoy your Sunday. अब तो संडे अब अच्छा जाएगा, अब तो क्लियरिटी आ रही है थोड़ा थोड़ा डोमेन का। Yes, you can enjoy your Sunday as well. Yes, thank you guys, thank you. You can share your feedback in a chat box, we'll be happy to read. Thank you guys, bye bye, मजा आ गई हो। Yes, bye bye guys, thank you.